Okay, let's start with the lesson. Um, Yesterday we have covered protection, network security tools we were discussing. Protection using antivirus we have already covered. Um, I'll just go through the important things like in antivirus, the software. There are two kind of things. One is software, one is the database. Now the software is used to search all the files present in the system in the computer, and it tries to match everything with the database. Now the database is basically a place where all kind of files, the virus files, their definitions are stored. So it tries to match all the files that it is scanning, and it matches it with the database. In case of match, it will give you the information that that file is infected, right? And then it will ask you to uh, put some points in that, right? It will ask you to disable it or remove it. And the very first thing it'll do is it'll try to repair such kind of files. If repair part is not done, then it will disable that file or quarantine that file. And then ultimately, if even if the quarantine thing does not work, it will remove that file, right? Such kind of files are removed by antivirus automatically. So that is about antivirus. Now the next important thing is the firewall. The firewall is actually another protection system which protects the networks, right? Antivirus, they are meant for the computers, single individual computers. And the firewall is a software or a hardware which actually blocks the unwanted access to your network. Network means where number of computers are connected, right? So it works in both the ways. It works on individual PCs also. It works on networks also, right? So anything which comes from any external network, it is checked by firewall, and if found right, only then the access is granted. Otherwise, the access is not granted, and the files are blocked there only, right? Now, firewall inspects the network traffic. It checks the network traffic and allow only that data to pass through the network that does not violate the security constraint. So जो एक्सेस जो जिसमें सिक्योरिटी कंस्टेंट्स जो हैं वो वायलेट नहीं होते, उनको वो पास करता है. अदरवाइज नॉट अलाउ यू टू पास, not allow any kind of data to pass. Right now, the firewall comes in two forms. One is the hardware firewall, and second one is the software firewall. Hardware firewall is basically um, a router is installed within a network, and that router checks everything which comes inside the network. Right, a router is a device which is installed. So hardware firewall में एक router device होता है, right? That router has a special kind of software which actually checks everything, right? Or in some cases, there is a software firewall. Software firewall is, it's a kind of application which is installed in the computer, and whenever some unauthorized access is there, some malwares try to access your computer, then it will block that, right? So as you see, there's a small diagram kind of thing given here. The firewall is a kind of protection in between internet and computer, right? Whatever harmful things are there, they are blocked by firewall, and only the useful things, the things which are not harmful, are given access to use the system, right? And sometimes these firewalls, they also encrypt the incoming data. Encryption is very important. Encryption is converting your data into a form which is non-readable.
सो वो आपके डेटा को एक ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है ताकि सिर्फ आपका कंप्यूटर ही उसको समझ सके। बिकॉज एन्क्रिप्शन में क्या होता है कि डेटा जैसा दिखता है वैसा नहीं दिखेगा, वो उसको उसकी फॉर्म चेंज कर देता है, सो दैट नोबडी एल्स कैन एक्सेस दैट। इवन इफ एक्सेस कर लिया तो उसको समझ नहीं आएगा क्या है वो, राइट। So data is converted into a form which is non-readable. This is also one very effective way of protection, right? So whatever important files you have in your PCs, they are all converted into a non-readable form. So it adds on the further protections, right? So protection में और एक addition हो जाता है, right? So that's it. That's all about firewall. Um, Now coming to the next topic, it is preventive measures while accessing internet. When you are using internet, what all things you should keep in your mind? How to protect your system? Preventive measures are the measures to be taken before using internet. किसी suspicion या किसी problem आने से पहले हमें क्या करना चाहिए? That are preventive measures. The first thing is never click on any suspicious link, right? So whenever you search the things on internet, you'll find a lot of links there, lot of mails you'll get, right? And you'll find उन mails में या उन web pages पे बहुत सारे ऐसे links होंगे जो थोड़े suspicious होते हैं। जैसे for example, if you try to download a movie, तो मूवी की बहुत सारी साइट्स बनी हुई हैं और हर साइट्स में एक लिंक नहीं होता, डाउनलोड नाम से कई सारे लिंक्स होते हैं, राइट। तो अगर आप करेक्ट डाउनलोड पे नहीं क्लिक करोगे, किसी अनकरेक्ट डाउनलोड पे क्लिक कर दोगे तो आप विल गो टू सम अदर साइट, राइट। सो दिस जनरली हैपेंस व्हेन वी डाउनलोड अ मूवी, राइट। सो ये नहीं करना है। So whenever you are trying to access any web page, so be particular that you will not click on any of the links which looks suspicious. So ये suspicious link को कैसे चेक करेंगे? आप उस लिंक के आसपास में देखो कि क्या लिखा है, right? कि what is that link about? Okay, go through that thing. So that will be helpful, right? You'll easily get कि ये कैसा डाउनलोड ऑथराइज डाउनलोड है या फिर कोई फालतू का लिंक है। ओके जैसे वो एडवर्टाइजमेंट है उसके नीचे डाउनलोड लिखा है, दैट मीन्स दैट डाउनलोड इज फॉर दैट एडवर्टाइजमेंट, नॉट फॉर द वेब पेज। फाइन। सो ये चीजें थोड़ी ध्यान में रखनी है। देन नेक्स्ट इज मेक श्योर द पासवर्ड्स आर स्ट्रॉन्ग एंड दीज पासवर्ड्स शुड बी चेंज्ड फ्रीक्वेंटली, राइट। पहली चीज तो जो भी पासवर्ड आप सेट करते हो, दैट पासवर्ड शुड बी स्ट्रॉन्ग, राइट। ऑब्वियस पासवर्ड्स नहीं देने हैं जिसमें आप अपना नाम डाल दें या मोबाइल नंबर डाल दो या डेट ऑफ बर्थ डाल दो, ऐसे पासवर्ड्स नहीं सेट करने चाहिए बिकॉज दीज काइंड ऑफ पासवर्ड्स कैन बी इजीली गेस्ड बाय एनीबॉडी, राइट। सो ऑलवेज सेट अ पासवर्ड विच हैज स्ट्रॉन्गर लेंथ, इसकी लेंथ काफी हो, राइट। सेकेंडली उसमें कैरेक्टर्स का कॉम्बिनेशन हो। You can use alphabet, you can use some numbers, you can use certain punctuation marks, comma, full stop, underscore, like that. So you should use a combination of all such things whenever you are making a password. Fine. So one more thing is that once you set a password, it should be changed regularly. Keep on changing. Change करने से क्या होगा कि even if somebody tries to access, किसी ने एक्सेस कर भी लिया है, तो अगर आप फ्रीक्वेंटली उसको चेंज कर रहे हो तो वो एक्सेस का भी उसको पर्सन को, जो हैकर है, उसको फायदा नहीं होगा। फाइन। नेक्स्ट पॉइंट इज नेवर डिस्क्लोज पर्सनल इंफॉर्मेशन। पर्सनल इंफॉर्मेशन में क्या क्या आता है? योर अकाउंट डिटेल्स, अकाउंट मीन्स योर बैंक अकाउंट डिटेल्स, योर पासवर्ड्स, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड डिटेल्स एंड अदर वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन, राइट। तो ये चीजें डिस्क्लोज नहीं करनी चाहिए कभी भी, बिकॉज जो ऑथराइज्ड सोर्सेज हैं जैसे बैंक्स वगैरह हैं, बैंक्स आपको इन डिटेल्स के बारे में कभी नहीं पूछता बिकॉज उनके पास तो पहले से डिटेल्स होती हैं ये सारी, राइट। सो प्लीज डोंट डिस्क्लोज एनी काइंड ऑफ पर्सनल इंफॉर्मेशन on any kind of link you get. It can be a mail, it can be a web browser, it can be a message, right? So and even if you
have accidentally given your personal information somewhere, kindly report that to the concerned authorities, right? जैसे मान लो व्हाट्सएप पे आपके कोई मैसेज आता है, आप you gave your date of birth or you gave your account details to somebody and you later on you realize कि यार ये गलत हो गया, so that kind of thing should be reported immediately to the company. Like WhatsApp की authorities को आप mail कर सकते हो, ठीक है? And there are some government organizations which are looking into it. You can pass it on to the government organization, right? So all such phishing issues must be reported to the concerned authorities. Fine. Then is security of the communication made over the internet can be indicated by security of the protocol being used. हम जब भी वेबसाइट ओपन करते हैं, तो वेबसाइट ओपन करते टाइम पे जो हम इफ़ यू सी ऑन द टॉप, जहाँ ब्राउज़र पे हम लोग वेबसाइट का नाम लिखते हैं, वहाँ पे शुरू में HTTP लिखा होता है नॉर्मली, एंड इफ इन प्लेस ऑफ HTTP इफ इट इज रिटन HTTPS, S का मतलब है कि दैट इज ए सिक्योर्ड कनेक्शन, ठीक है? सो ऑलवेज ट्राई टू लुक इनटू वेबसाइट जब भी ओपन करते हो, तो ब्राउजर में जब आप सर्च कर लोगे, लाइक इफ यू टाइप google.com एंड प्रेस एंटर, आप देखो वहाँ पे शुरू में हाँ प्रोटोकॉल नेम लिखा होता है, HTTP इज द मोस्ट कॉमन प्रोटोकॉल अवेलेबल देयर ऑन नेट। तो HTTP के साथ में अगर S है तो मतलब वो जो वेब पेज आपने ओपन किया है दैट इज सिक्योर्ड काइंड ऑफ वेब पेज, राइट? सो ऑलवेज go into this, check these things, right? Fine. So some other form of security in particularly for a website is also there, like padlocks होते हैं। Padlocks if you see, जब जहाँ पे आप एड्रेस लिखते हो उसके साइड में एक छोटा सा लॉक काइंड ऑफ थिंग इज देयर, राइट? एक लॉक का सिंबल होता है। अगर वो लॉक का सिंबल क्लोज्ड है दैट मीन्स दैट पर्टिकुलर वेब पेज और वेबसाइट इज सिक्योर, राइट? और अगर वो पैडलॉक ओपन है दैट मीन्स योर वेब पेज दैट यू आर एक्सेसिंग इज नॉट सिक्योर, right? Although if it is open, it will give you a message on the screen also. Whenever it opens that particular web page, it will give you a message on the screen कि भाई ये insecure page है, and even if you want to continue, then click on continue or you can close this, right? अब ये होता क्या है बेसिकली कि हर वेब पेज जो है they should have one digital certificate attached to it, राइट? डिजिटल सर्टिफिकेट का मतलब कि वो किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का है जो ऑथराइज्ड ऑर्गेनाइजेशन है, और उससे ये पता लगता है कि उस वेब पेज के अंदर जो भी कंटेंट है वो कंटेंट जो है वो सिक्योर कंटेंट है, ठीक है? ये डिजिटल सर्टिफिकेट, इसको हम SSL भी बोलते हैं, सिक्योर सॉकेट लेयर, राइट? और डिजिटल सर्टिफिकेट का इंडिकेशन वही है पैडलॉक, एक लॉक काइंड ऑफ सिंबल इज देयर ऑन द just next to the area where we type the name of the web page or website, the address bar on the top, right? So always check this. Then whenever you are using web browsers like Mozilla Firefox and Chrome and Explorer, Internet Explorer, इनको आप रेगुलरली अपडेट करो फ्रॉम द नेट। अपडेट करने में यही फ़ायदा है कि जो सिक्योरिटी सर्टिफिकेट्स इशू हुए हैं अलग अलग वेबसाइट्स को, उनका डेटाबेस जो है वो उसमें अपडेट हो जाएगा, सो दैट जो भी नई फाइल्स हैं वो भी सिक्योरली ओपन होंगी आपके इस पे ब्राउज़र पे, राइट? फॉर एग्जांपल क्रोम ब्राउज़र इज up to date if the security patch indicates by 3 horizontal lines in the top right corner is gray in color. So ये भी एक तरीका है, जैसे क्रोम जो ब्राउजर है, क्रोम ब्राउजर में there are 3 horizontal lines on the top of on the top bar, and if that 3 lines are gray in color that means this the page that you're opening is secure. And if it is orange, green or red color, it indicates that the browser update is available for 2, 4 or 7 days respectively. तो वहां से आपको पता लग जाएगा कि ब्राउजर को अपडेट करना है या नहीं है। तो अगर वो 3 lines are grey in color, that means your browser is up to date,
एंड इफ इट इज इन ग्रीन कलर दैट मीन्स 2 दिन के बाद आपको अपडेट करना पड़ेगा, बिकॉज 2 दिन में यू विल गेट द न्यू अपडेट ऑफ दैट ब्राउजर. और ऐसे ही अगर देर आर इट दोज लाइंस आर ऑफ ऑरेंज कलर, so update will be available in 4 days, and if it is in red color that means your update will be available in 7 days. तो यहाँ से हमें पता लग जाएगा कि वेब ब्राउजर अपडेट कब होने वाला है. ठीक है. So always check these things whenever you access anything on net. Then make sure that the website address is properly spelled. Spelling of the website, right, should be correct. Why this thing we should keep in mind that there are many websites which are phishing website, and they are made with the similar kind of name to any popular website. जैसे मान लो cbse.nic.in है, तो cbse.nic.in is the official name. आपको बहुत सारी ऐसी वेबसाइट मिलेंगी जिसके इंजन वेबसाइट के नाम में cbse होगा, right? So if you type cbse or something else, so will land up into a different site. It's a wrong site, right? And that site can be a phishing site. Fine. तो जो आप वेबसाइट नेम एड्रेस में डालते हो एड्रेस बार में, that name should be spelled correctly, because there are many websites for the almost similar kind of name. So you should not, you may not enter into that, right? So ये थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है. Then antivirus software should be up to date, right? This we already covered why antivirus software should be updated regularly. Reason ये है कि antivirus software में database होता है, और database को update करना ज़रूरी है, because it will carry all the latest kind of information related to malwares. Otherwise जो लेटेस्ट वायरस हैं या जो लेटेस्ट फाइल्स हैं, इन्फेक्टेड फाइल्स, उनकी इंफॉर्मेशन डेटाबेस में नहीं जाएगी, and that antivirus will not be able to identify such different new kind of virus or malwares. Okay, डेटाबेस को अपडेट करना बहुत जरूरी है. Delete cookies periodically. What are these cookies basically? These are small piece of information about the client browsing a website. Client browsing a website, like if I am a client, I'm using certain thing on my system. So whenever I try to log in somewhere, like if I open Google or gmail.com, right? So I'll put up my password there, I'll put up my ID there, and I frequently used to log in and log out. तो वो क्या होता है कि वो ब्राउजर जिसमें मैं वो खोल रहा हूँ, वो ब्राउजर एक फाइल जनरेट करता है, कुकीज फाइल बोलते हैं उसको. In that file it will try to save some piece of information. It can be the ID, it can be a password, it can be anything related to whatever you have filled there on the site. तो उससे ब्राउजर को इजी होता है किसी भी वेब पेज को एक्सेस करना, right? So the server basically records the client's information, like domain name. The server records the client information such as domain name. Domain names are the name of the websites, and registration IDs on the server side, right? So that particular information is stored in the form of a file or a string. That file is called as a cookie, right? So whenever a server sends you some data, like if you request for a website, तो वेबसाइट का डेटा जब सर्वर के पास से आता है, तो सर्वर उस वेबसाइट के डेटा के साथ में इन कुकी फाइल्स को भी भेजता है, right? So that the client is easy to access that particular thing, क्योंकि उसको URL वगैरह सारा कुकी फाइल से मिल जाता है, right? So the thing is that we should always delete such kind of files regularly, right? Because जितने भी hackers हैं, उनका सबसे most जो priority वाला area है, that is the cookie files, because they'll get a lot of information from these cookie files, right? So ये cookie files को हमें remove करना चाहिए periodically, right? And they're all stored in the temporary folder
तो टेम्पररी फोल्डर्स को रिमूव करो। टेम्पररी फोल्डर्स कैसे रिमूव करते हैं, आई जस्ट शो यू, मैं दिखाता हूँ। I'll just show you my screen. I think there is a problem in the screen sharing. चलो, I'll just tell you. हम क्या करते हैं कि if you go to start button and you'll find a small search bar there. In that search bar, you just type percentage sign, then temp, TEMP, again percentage sign, and press enter. I'll repeat, type percentage sign, temp, again percentage sign, and press enter. तो उससे आपका जो टेम्परेरी फोल्डर है वो ओपन हो जाएगा। ऑल दो टेम्परेरी फोल्डर्स लाइज इन द C drives of your my computers option, right? Then that you have to search from there, right? The best way is आप start में जाओ, type करो percentage का sign, put temp, TEMP, then again put percentage sign and press enter. अब directly उस temporary folder को open कर लोगे, and then उस folder के अंदर जो जो files हैं सारी की सारी select करके remove कर दो, delete कर दो, ठीक है? So all cookie files will be deleted, all temporary files that you have downloaded from net will be deleted, right? So try this yourself. There's nothing much difficult about it. Okay, चलो continue करते हैं. Then cyber security. Before we continue this, मुझे लगता है काफी बच्चे आ गए हैं, तो मैं attendance एक बार दोबारा देख लेता हूँ. Okay, done. The next topic is cyber security. साइबर सिक्योरिटी रेफर्स टू साइबर क्राइम्स क्या है पहले वो पता होना चाहिए. साइबर क्राइम्स आर द क्राइम्स रिलेटेड टू मिस यूज ऑफ कंप्यूटर और इंटरनेट. व्हाट काइंड ऑफ मिस यूज? इन थेफ्ट, fraud, or forgery, right? So any kind of unlawful act wherein the computer is either a tool or a target or both. तो कोई भी अनलॉफुल एक्ट जो है कंप्यूटर का यूज करके या कंप्यूटर को खराब करने के मकसद से या दोनों चीजों से कुछ भी ऐसा टास्क होता है, ऐसा एक्ट होता है, सच एक्ट इज कॉल्ड एज साइबर क्राइम, राइट? नाउ व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स दैट कम्स अंडर दिस साइबर क्राइम? इसमें सबसे पहला है सेंडिंग स्पैम मेल्स टू अनइंटरेस्टेड रेसिपिएंट्स. इफ आई एम नॉट इंटरेस्टेड, so and I am still getting some spam mails without any notification, so that is a kind of cyber crime for me, right? तो आपने देखा होगा, अगर आप स्पैम मेल्स चेक करो तो स्पैम मेल्स में देयर इज एन ऑप्शन टू अनसब्सक्राइब. अनसब्सक्राइब करने से क्या होता है कि यू गिव योर कंसेंट कि भी मुझे ये ऐसी मेल्स नहीं चाहिए, right? So that company who has send you that spam mail will not send you those kind of mails again. और अगर वो दोबारा करती है, दोबारा मेल सेंड करती है, that means it's a kind of cyber crime that company is doing, and then you can file a complaint against that. ठीक है? So ये एक साइबर क्राइम है.
Then hacking someone's account or computer और system, किसी का account या system hack करना, तो that is also one kind of crime, right? Hacking करना जो है illegally crime है. Stealing someone's personal information through phishing, this is also crime. Hosting a site carrying lot of malwares and being source of spreading them, that is also a crime. Hosting a site means you have made a site and your site is available on internet. You are hosting it. You are the owner of the site, and in your site there are a lot of malwares, a lot of other malicious programs. So your such site is totally called as a part of cybercrime, right? So you should not make such websites. Then harassing someone through mails, right? So mails के through किसी को harass करना is also a kind of cyber crime. Fine. Posting offensive content on a site. The site means here is a website or any social media platform. कहीं पे भी आप कहीं पे भी किसी तरह का offensive content post करते हो, send करते हो, so that is also a crime, but it is counted as crime, right? So हम लोग बहुत सारे like if you see Facebook पे बहुत सारे लोग वीडियोस वगैरह डालते हैं, तो ये ऐसे fraud videos if you are doing, so that is part of crime. So be vigilant about it. ये ध्यान रखो कि कभी भी कोई भी ऐसा ऑफेंसिव कंटेंट नहीं डालना है जो किसी कम्युनिटी के खिलाफ हो या किसी पर्सन के खिलाफ हो, राइट? सो इट इज काउंटेड एज क्राइम, साइबर क्राइम. Defaming someone using internet, that is also crime. किसी को defame करना. Forging someone's digital signatures. Digital signatures are nowadays some documents are sent through online platforms, official documents. तो अब उनकी ऑथराइजेशन को चेक करने के लिए डिजिटल सर्टिफिकेट्स करके एक फाइल बनाई जाती है जो उन सारे डॉक्यूमेंट्स को, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स को ऑथराइज करती है दैट डॉक्यूमेंट बिलोंग्स टू वन पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन और इंडिविजुअल. सो ऐसे किसी डिजिटल सर्टिफिकेट वाले डॉक्यूमेंट को अपनी फॉर्जिंग करना, मतलब फॉर्जिंग इज टू यूज देम इन योर ओन वे, right? So that is again a crime. Indulging in fraudulent financial transactions, financial transaction where money is involved. So if you are indulging in any kind of transaction where money is there and it is a kind of fraud you're doing, that is also a kind of crime, a cyber crime. Then providing misleading information to clients, to public through internet sources. मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन मीन्स जो इन्फॉर्मेशन गलत है, लाइक किसी को गलत मैसेज दे रही है किसी क्लाइंट को, लाइक इफ यू आर रनिंग ए ऑर्गेनाइजेशन तो आप अपने क्लाइंट्स को ऐसे मैसेज दे रहे हो, तो दैट इज अगेन crime, right? Then intellectual property thefts. Intellectual property we have already covered up. Intellectual property मतलब कि किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी, अगर हम किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी या चीज इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर रहे हैं विदाउट द कंसेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन और इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज आल्सो क्राइम. फाइन. सो now cyber laws has been made, right, to systematic use, to make systematic use of resources, राइट? ई रिसोर्सेज का मतलब है बिजनेस, ऑनलाइन बिजनेस हो या सर्व एज ए मेजर अगेंस्ट illegal crime, cyber crime. So cyber laws are made, government has made so many laws of it. उसमें से एक लॉ ये है IT एक्ट 2000, इसको हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट बोलते हैं, अमेंडमेंट एक्ट बोलते हैं. इट केम इन 2008, right? It defines that offenses and penalties of
cyber crimes. It gives you the what all penalties will be applicable to such kind of cyber crimes, right? So क्या 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 penalties होनी चाहिए, क्या क्या penalties, what all kind of penalties will be given to the people who are doing such kind of cyber crimes. And then there is a cyber police also. This is part of the normal police. Cyber police एक wing है उनका. It is responsible for detecting such crimes and taking necessary measures against it, right? So ये पुलिस का ही एक wing है which just check all such kind of crimes and then take necessary action against the people who are doing such crimes. So we should not do it. Fine. So I'll end up here. We'll wind up here. Okay, chalo, let's discuss any point. The Panshu point 6 point. 6 point is पोस्टिंग ऑफेंसिव कंटेंट ऑन द साइट. किसी भी साइट पे जैसे आप फेसबुक पे कुछ पोस्ट कर रहे हो ना, तो वो पोस्ट करना जो है, अगर आप कुछ ऑफेंसिव मींस जो लोगों को भड़काता है, तो ऐसा कंटेंट अगर आप पोस्ट कर रहे हो तो दैट इज रॉन्ग. ठीक है, वो हमें नहीं करना चाहिए. इट्स अ पार्ट ऑफ साइबर क्राइम. फाइन. चलो, एनी अदर डाउट टू एनीबडी? Sure, fine. So we'll end up here and go through as you have already the books. Now, one more thing I wish to tell you that CBSE is changing the curriculum. वो करिकुलम को कम कर रहे हैं. अभी आईटी का करिकुलम उन्होंने लॉन्च नहीं किया है, बाकी सब्जेक्ट्स का आ गया है. सो विजिट द CBSE साइट एंड चेक. cbseacademics.nic.in साइट है. cbseacademics.nic.in, तो वो जरूर चेक करो. ठीक है. Okay then, we'll meet tomorrow again. Okay, I'm ending up here. Okay, morning again.